Uh, Let me start with the example given by J. Bayer in the book. और summary भी मैंने उसी से शुरू की बुकलेट ऐप में. There is a restaurant called Cheese Factory in US. And you know how much percentage of revenue they spend on ads? 0.2% of the total revenue is spent by Cheese Factory on advertisements, which is $268 million lesser than its immediate competitor called Darden Restaurant, which is again in US. So, तो ऐसा क्या है, मतलब उन्होंने ऐसा किया क्या? Word of mouth इतना strong क्यों है उनका? So they came out with an idea. So if you go to that restaurant called Cheese Factory in US, they have got some. They don't give a menu card. They have a thick book of almost 20-30 pages. सिर्फ चिकन के 85 आइटम्स है, डिशेस उसमें. एंड मोस्ट जब कोई लोग रिव्यूज लिखते हैं या बातें करते हैं ना, तो 90% ऑफ द टाइम मेन्यू मेन्यू साइज के बारे में बात होती है उस पर. यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतनी लंबी लिस्ट, तो फिर डोंट द कस्टमर फील ओवरवेल्म, क्या चूज करे, इतने सारे ऑप्शन है. हाँ, वो एक ड्रॉबैक हो सकता है, बट ये इतनी अनोखी चीज है, इतनी रेयर है कि वो ऐसे किताब ही देते आपको रेस्टोरेंट में. और अब उसमें से और कुछ 6,000 वर्ड्स टोटल है उसमें. 85 चिकन के डिशेस है, वगैरह वगैरह, वीगन, वेजिटेरियन, वेज, नॉन वेज, सब कुछ है उसमें. तो व्हेन सो व्हाट इज वर्ड ऑफ माउथ इज that particular idea or a phrase or a word repeatedly comes in the daily day-to-day conversation of people after they visit your service or consume your product. Now you can plant that word, that phrase. So when people start making that phrase, that sentence, that idea as part of that daily conversation with their friends, with their relatives, with their family members on the dining table, that is your word of mouth. That is your talk trigger. It should constitute at least 25% of the total conversation. If you ask me, सबसे common, there are thousands of reviews on Play Store and Apple Store about Booklet app. So Google Analytics gives me the common words which are used in the reviews. Mostly 4 stars, 4.5 or 5 stars ही है. तो the most common word is idea. कि आइडिया सबको पसंद है कि. एंड मोस्ट कॉमन वर्ड, सेकंड कॉमन वर्ड वाज व्हाट्सएप. आई वाज अमेज्ड बिकॉज आई स्टार्टेड ऑन व्हाट्सएप इनिशियली. ऐप बुकलेट ऐप तो बाद में आया. So everybody was saying, हाँ, I had joined him on WhatsApp and later on he came up with this booklet app. So ये सबसे common है. So whenever somebody comes to meet me, the first question I ask them is, how did you come to know about me? क्योंकि मैंने तो कहीं रिक्शा के पीछे स्टिकर लगाया नहीं, डाउनलोड बुकलेट ऐप. ना कभी यूट्यूब पे ऐड चलाई, ना इंस्टाग्राम पे ऐड चलाई, ना टीवी, तो खैर मुझे आई कांट इवन अफोर्ड. And I never thought of spending on ads because I wanted to give something for free. And spending on something to give for free is the biggest foolishness I would ever do. मतलब फ्री देने के लिए मुझे पे करना पड़ेगा. Then I'm the most flop thing in the world, right? And I wanted to be a social entrepreneur, so frugality was the first principle I wanted to follow. So, and that's why I started on WhatsApp. And that is the most common talk trigger amongst people. एक तो idea that wow, he is reading for India. He's known as booklet guy. So everybody reads for oneself, but he is reading for others. This has become the most common talk trigger about booklet guy. Uh, so why word of mouth? As I said, it has got amazing amount of persuasion power. Yeah, जितना पैशनेटली वो आदमी, आपका जो कस्टमर है, वो उसके दोस्त को बोलेगा ना, आप कितने भी लाख चिल्ला चिल्ला के बोलो, वो फर्क नहीं पड़ेगा. सी, A talking about A's product and B talking about A's product.
बहुत फर्क है इसमें. सलमान खान टॉकिंग अबाउट हिज मूवी एंड माय फ्रेंड टॉकिंग अबाउट सलमान खान मूवी इज लॉट ऑफ डिफरेंस. बिकॉज आई नो दैट सलमान खान हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन हिज मूवी. वो तो अच्छा ही बोलेगा ना. असली रिव्यू तो मुझे मेरे दोस्त से आएगी, बिकॉज आई ट्रस्ट माई फ्रेंड. एंड ट्रस्ट इसमें पावर और परसुएशन कि वो कितने पैशनेटली वो मुझे रेकमेंड करता है, वो मूवी, वो किताब, वो वेब सीरीज, व्हाटएवर, या स्टैंड अप कॉमेडी का कोई शो है, या आई नो वी नो कि ऐसे कुछ दो तीन दोस्त रहते कि वो अगर कुछ रेकमेंड करते तो हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे, बिकॉज वी हैव अ पास्ट हिस्ट्री. वॉट एवर ही recommended, and we did it, and we were happy that yes, his recommendation was so valid and true. Yeah. तो बट इसका मतलब ये नहीं है, टेस्टिमोनियल्स की जो बात होती है ना अक्सर, लेट्स फॉर एग्जांपल किसी का कोचिंग क्लास है, हाँ, तो वो टेस्टिमोनियल्स डालते हैं ना कि देखो मेरे स्टूडेंट ने 99 मार्क्स निकाले. फिर वो स्टूडेंट का कोई वीडियो दिखाते कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये टीचर्स बहुत अच्छे हैं. दैट इज नॉट वर्ड ऑफ माउथ, because you're asking your customer to come on your platform and talk good things about you. That means you are only talking. Real word of mouth is the student of that coaching class is telling his neighbor who is 1 year younger to him and is about to take an admission to some college or some private classes, and he passionately recommends कि भाई तू यही क्लास लगा, दूसरे किसी क्लास के बारे में सोच भी मत. This is the best class. मुझे फायदा हुआ है. Now you will not come to know about it. You will come to know through admissions. So वो जब लड़का एडमिशन लेने आएगा आपके क्लास में, you should ask how did you come to know about us. And when he says my neighbor Mr. ABC is your ex student, वो लास्ट पिछले साल के बैच में वो पास आउट हुआ है, उसने मुझे रेकमेंड किया. नाउ यू आर, your talk trigger is working, your word of mouth is working, friends recommendation is working. Asking your customers to come on your platform और उसके फोटो लगाने, और वो बस के ऊपर देखते हैं ना हम वो 99%, 99.99% भी देखा मैंने कल कि ऐसे भी मार्क्स मिलते हैं 10th स्टैंडर्ड में. All right. So asking testimonials and putting them on a platform is not word of mouth. All right.